Okay, guys, so in this video, I'm going to share with you when I basically like true impulse. Okay, जैसे कि हम लोग टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सीखे हैं, राइट? कि वीकली से H4 अगर स्विंग करना है तो डेली से H1, राइट? एंड व्हेन आई वाज टीचिंग यू टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आल्सो आई टोल्ड यू गाइस, अगर वीकली से H4 में क्लीन नहीं है अगर प्राइस एक्शन, तो वी कैन लुक फॉर वीकली टू H1 टू इम्पल्स प्ले, राइट? तो इस वीडियो में हम लोग वही कवर करने वाले हैं। ओके, सो इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, को ज्यादा लंबा मैं नहीं बनाऊंगा। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज बेसिकली गोल्ड फ्यूचर्स चार्ट। ओके, ये गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट है। ठीक है, एंड इफ यू सी हियर वी हैव व्हाट, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। ओके, यू कैन सी वी हैव दिस वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप, सो वी हैव दिस वीकली इंटरनल एंड दिस इंटरनल टू एक्सटर्नल वी हैव, राइट? सेटअप बेसिकली इंटरनल टू एक्सटर्नल, right? And if you see here also, if you see back also, gold is very bullish. So we have to look for continuation, right? And हम लोग का यहाँ पे narrative है weekly internal to external, okay? And also हम लोग ये weekly internal से hold करके bounce किए हैं, right? You can see. But let's focus here, okay? Let me delete this. So let's wait for market to tap this weekly internal, okay? So here you can see we tap this weekly internal. So first let's go to daily time frame to see if we have anything or not. So on daily, here you can see we have tapped weekly bullish value gap. Let me mark this little darker. So on daily time frame, you can see we have grabbed this liquidity, right? This swing low, we have swept this low, okay? And ये Tuesday candle, ये Monday का candle था, okay? I guess Monday was something maybe bank holiday कुछ था, that's why it's not showing Monday data. Okay, but you can see a new week when open market grab this low and tap this weekly fair value gap. So let's see 4 hour time frame as well. Okay, so let's go step by step. So you can see we have swept this liquidity old low and we tap this weekly bullish fair value gap. And can you spot something more here? Okay, can you spot anything? Okay, जो अभी तक हम लोग सीखे हैं, we can see we have very nice accumulation, right? Market accumulated, market manipulated. कहाँ मैनिपुलेट किया? टुवर्ड्स आवर की लेवल, राइट? जो वीकली बुलिश वैल्यू गैप था, मार्केट मैनिपुलेट टुवर्ड्स आवर की लेवल और बेसिकली दिस स्विंग लो लिक्विडिटी। ओके, यू कैन सी द मैनिपुलेशन। Okay, now we tap this weekly level. What we looking for? We're looking for the distribution to the upside, right? You can see AMD model as well here. Okay, so if we if we're going to use time frame alignment, we know we're going to use from weekly to 4 hour for swing. Okay, I'm talking about swing. You can apply this on other thing as well. Okay, so we have to wait for the 4 hour bullish fair value gap to form, right? You can see we definitely basically displacing here, right? We tap this and we're displacing higher, but we have not created any bullish fair value gap right now. Okay, you can see we have very little bearish fair value gap here, right? Little bearish fair value gap here. You can see. Let me mark this red. Okay, so let's see if we create bullish fair value gap or not. So you can see we have not created any bullish fair value gaps noted. Okay, so you can see later again we dropped, right, and again we swept this liquidity. Now many people think ki now this weekly fair value gap is not holding, and that's not true. Basically, you are still inside this weekly bullish fair value gap. Your higher time frame is still bullish, and you can see we have AMD model as well, and very nice liquidity kind of relative equal high here. You can see, right? Also here relative equal high liquidity, right? So still your high time frame is bullish. Okay, so you still waiting for 4 hour, for full 4 hour displacement higher with bullish fair value gap. Okay, so let's see. So here you can see we not creating any bullish fair value gap. Okay, so I want to check 1 hour time frame as well कि 1 hour time frame में क्या मेरे को टू इम्पल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, so let's go to 1 hour time frame. So you can see जब मार्केट यहाँ पे पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप टैप किया, राइट, देन अगेन मार्केट ड्रॉप्ड हियर, ग्रैब दिस लिक्विडिटी, राइट, रेड दिस लिक्विडिटी, लेट्स मार्क दिस क्रॉस, read this liquidity and then displace higher, right? So you can see we have this two impulse play, right? Impulse one, retracement, impulse two, right? So we have this two impulse play, right? So instead of waiting for 4 hour bullish fair value gap, I'll be entering in this, and you can see this is kind of silver bullet model also. We grab the liquidity and then we're displacing, right? We grab the liquidity and displacing higher. And here you can see we have this bullish fair value gap, right? We have this bullish fair value gap. Okay, this was the first impulse, right? Let me mark this again. This was the first impulse, right? We tap this fair value gap and again displace higher on the second impulse. Okay, so let me delete this.
And you can see we have this what high probability order block, right? This is our high probability order block, right? And you can see when we have second impulse में हम लोग क्या फॉर्म किए? Bullish fair value gap. Okay, so instead of waiting for 4 hour bullish fair value gap, if I see we have two impulse leg on 1 hour and it's respecting fair value gap, created this second impulse high probability. Also, you will see कि ये जो हम लोग का best fair value gap था 1 hour में, it becomes inverted fair value gap and that's overlapping also, right? Inverted fair value gap भी overlap कर रहा है यहाँ पे 1 hour में. So this can be a nice area. You understand कि your higher time frame is still bullish, right? Because we're looking for weekly to internal to external, you can see we have again here nice relative equal high, right? And kind of again AMD model accumulation manipulated again downside, right? 1 hour time frame में वही चीज हम लोग का 4 hour time frame में हम लोग यहाँ पे देखे थे, right? So here in this fair value gap I can place long, okay, and I can target 1 to 2, 1 to 3, whatever you like to target basically, okay. So you can see how beautiful it worked. Of course it consolidated, and let's see if you have entered at this fair value gap, for example, okay, at the opening of the fair value gap, you can put your stop loss either below the this low, okay, जो फर्स्ट इम्पल्स का रिट्रेसमेंट था उसके वो लो के नीचे, मतलब ये जो सेकंड इम्पल्स के लो के नीचे आप रख सकते हो, और फॉर द वेरी सेफर साइड यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो एंड यू कैन टारगेट ऑल द वे अप like this something, okay. So it's on you how you want to manage your risk. In this I like to put just here, okay, क्योंकि अच्छा डिस्प्लेस हुआ है मार्केट में, ये हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक भी है होल्ड करने के लिए, okay. So it's on you, but if you see market traded higher, okay, but during NFP it traded lower, okay. So अगर let's say stop loss अगर इसके नीचे रहता तो definitely it hit your easily 1:2 risk reward somewhere, okay. Okay, I hope बस ये समझ में आ गया होगा कि when I look for 1 hour time frame, when I do, if you see 4 hour time frame, okay, on 4 hour we have created fair value gap, but here we have created fair value gap, okay. And अगर 1 hour time frame अगर आप साथ ही साथ देख रहे हो तो मे बी यू हैव एंटर्ड इन दिस फेयर वैल्यू गैप, ओके, एंड कैन कैप्चर द मूव बेसिकली, ओके. सो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है. सो दिस वाज द चार्ट ऑफ गोल्ड फ्यूचर्स इस वीक का था बेसिकली, ओके. एंड अगर आप गोल्ड फॉरेक्स में जाके देखोगे, एक्स ए यू यूएसडी में देखोगे, तो उसमें बेसिकली ये वीकली फेयर वैल्यू गैप टैप ही नहीं किया था, ठीक है. बट गोल्ड फ्यूचर्स में टैप किया था, एंड बस मेरे को एक एग्जांपल शोकेस करना था. दैट्स व्हाई आई शेयर्ड दिस एग्जांपल, ओके. होप यू गाइस अंडरस्टैंड when I look for two impulse and when basically we should align time frame, okay. You have to watch both, जिसमें आपको ज्यादा अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, और आपको हायर टाइम फ्रेम क्लियर है जिसमें अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, एंटर, ओके. एंड एक और चीज मैं इसमें बोलूंगा कि you can see, let's say you have entered here for example at this fair value gap, okay, second impulse का जो fair value gap था यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है. एंड यू नो वीकली एक्सटर्नल ये था अगेन, एज आई सेड सो मेनी टाइम, आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि आपका ये वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप से यहाँ तक का अगर रेंज है, तो आपको बेसिकली बॉटम कैच नहीं करना और टॉप में एग्जिट नहीं करना. यू हैव टू बेसिकली जो ये रेंज है आपका, ये जो पूरा रेंज है, इसमें इसमें आपको एक मूव कैप्चर करना है, ओके. हो सकता है कि आप यहाँ से यहाँ कैप्चर किए एंड आप प्रॉफिट बुक किए 2 hour 1 hour वट एवर, ओके, एंड यू आर हैप्पी. सो हियर यू कैन सी वी हैव नॉट इवन ग्रैब दिस हाई, बेसिकली दिस लिक्विडिटी जो ये है या फिर एक्सटर्नल, बट इवन इफ यू हैव कैप्चर्ड हियर एंड बुक सिक्योर्ड हियर, it was easily 1:2 risk reward profit, okay. So you don't have to basically capitalize all the move, okay. So yeah, see you on the next video.